9, 12, going 10, 41. 10 floor, 10 25 for 25 at the morgue, top 25 at floor. the mock top floor. तो आई थिंक सो सबको आने तो पे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये पूरा प्रोसीजर क्या है, हम ये टेस्ट क्यों ले रहे हैं और ये रिसर्च क्यों चल रहा है, रीजंस भी बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं कि व्हाट इज़, हम रिसर्च किस पे ले रहे हैं। तो क्रिमिनल आजकल एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं जिसको वो प्रेफर लेबल कर रहे हैं एज अ जूस, राइट। तो Okay. जहाँ अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स हमारे पास एक पहला केस आया था, जब हम एक दफ़ा परसेंटेज पुलिस ऑफिसर ने प्रोवाइड की थी, 2 परसेंटेज प्रोवाइड की थी, जिसमें एक जूस का एक आया था और एक लेबल आया, एक आया था हमारे पास हेरोइन। हमने बेसिकली फर्स्ट Okay. टाइम हमने क्या की थी, हमने बेसिकली माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस की थी। माइक्रो Okay. मैं हमने सबसे पहले क्या किया था, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस की थी, ठीक है। तो कि जिससे हमें पता चलेगा कि जिससे हमें पता चला कि ये जो है जिसके अंदर कंपाउंड्स हैं, जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है, इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट, जो नॉर्मली हमारे पास क्लासिफाइड नहीं है हमारी बुक्स के अंदर और हमारे डेटाबेस के अंदर। इस काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ न्यू ड्रग जो हमारे एनालिसिस में नहीं है, राइट। अब उसकी क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, वी डोंट नो एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, और ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। और जिसकी वजह और अकॉर्डिंग और कुछ ये इंसिडेंट बढ़ते रहे लोगों के पास, अकॉर्डिंग टू पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट्स के मुताबिक, आई कॉन्टेक्टेड विद दी ये सरबजोत गिल, इन्फॉर्म मी के कुछ जो रिसेंटली जो ड्रग्स हैं, ये जो है फैलाया जा रहा है, और जिसकी वजह से लोग जो है कुछ हर दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, और जो हमारे नॉलेज में नहीं है, दे आर डूइंग दिस ड्रग, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं है, ठीक है। एक महीने के बाद की बात है, या कुछ वीक्स के बाद की बात है। वन ऑफ द ऑफिसर हेनरी चार्ल्स, लेट मी पुट हिज नेम। Okay, one of the officer which is named as Henry Charles, right? हाँ जी. एक मिनट, he was a victim, उसके ऊपर ये क्रिमिनल ने ड्रग टेस्ट किया था, ठीक है। ही वॉज शॉट Okay. डाउन, उनकी बॉडी पे ब्लीडिंग हल्की हो रही थी, उसने अकॉर्डिंग टू हिम उनकी ब्लीडिंग काफ़ी बहुत हल्की हो रही थी। और अब वहाँ पे उन्होंने कहा, एज पर सिचुएशन उन्होंने बताया कि वो लोग उनको चाहते थे कि सस्पेक्ट और ऑफिसर की तरफ एक्सचेंज करना है, उन्होंने एक्सचेंज करवाना ऑफिसर और एक साइड पे क्रिमिनल, राइट, एक्सचेंज करना हाँ जी, था। हाँ जी. तो How बेसिक deep was the wound? Bullet बुलेट wound. वुंड से वो कहते हैं, मुझे हमारे वो तो मेडिकल वो रिपोर्ट में पता होगा, मेरे पास मुझे पता नहीं कि वो मेडिकल रिपोर्ट उसके Okay. ऊपर लिखी है कि Bullet wounds. बुलेट वुंड थे, जहाँ तक मेरे पास नॉलेज में आया अकॉर्डिंग टू मिस्टर हेनरी, उनकी स्टेटमेंट्स मैंने ली हैं। Okay. वो विक्टिम थे, उसको बुलेट लगी थी, अचानक से उन्होंने उनको जब उन्होंने वो सिरिंज इंजेक्ट की, डायरेक्टली इंट्रामस्कुलर की होगी, क्योंकि दे आर नॉट वेरी मच एक्सपीरियंस विद दी वेन्स के, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इंटरवेनर नहीं लगा सकते क्योंकि उसके प्रॉपर बैठ के देखना पड़ेगा वेन्स कहाँ पे है कैसा कुछ। तो ठीक Okay. है, ओके। तो ये केस हुआ था पहले, ठीक है, एंड्री चार्ल्स। तो उन्होंने क्या, अकॉर्डिंग टू हिम इस रिपोर्ट्स उन्होंने कहा है कि वो एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही वॉज फीलिंग लाइक, उनको बॉडी का पेन लेवल कुछ भी फील नहीं हो रहा, ही वॉज लाइक सेंसलेस, बॉडी बिल्कुल सेंसलेस होती है। और जस्ट लाइक यू कैन से प्रॉबेबली न्यूरो सिस्टम होता है, न्यूरो सिस्टम फॉर दी, जो न्यूरो सिस्टम का जो सीन है फॉर दी ब्रेन के साथ जो लिंक होता है ना, न्यूरो सिस्टम का जो आपके पेन को आइडेंटिफाई करती है, आपकी बॉडी में किस जगह Yep, पेन हो yep. रहा है। Neuroreceptors. अभी मुझे इसका एग्जैक्ट, हाँ, न्यूरो रिसेप्टर जो है, तो Okay. वो उसका प्रॉबेबली चांस हो सकता है कि उसका डिस्कनेक्टिविटी का, ठीक है। क्यों, अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोइड पेन किलर कैन डू दैट थिंग, ठीक है। अब हमारे पास It could be a blockage too, na? ब्लॉकेज भी या कर तो सकते हैं, डिस्कनेक्ट. बट पॉइंट ये समझने तो पर टेम्पररी टाइम के लिए नहीं समझ। अब पॉइंट की मैं बताता हूँ, पूरे कंप्लीट करे तो वो मेरे दिमाग में भी है कि भाई वो हो सकता है परमानेंटली इस तरह हो, कुछ ऐसा कुछ हो कि परमानेंट ब्लॉकेज हो, ऐसा कुछ मैटर हो, राइट। तो Okay. तो पॉइंट ये हुआ रिसेंटली कि उनको बताया कि मैं सर्टन टाइम पीरियड के लिए आई वाज फीलिंग नथिंग, आई वाज लाइक कि जो लाइक नहीं प्रॉपर फुल रॉक ऐसा फील कर रहा मैं, लाइक मेरे मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, मेरी बुलेट लगी थी, मुझे वो फील तक नहीं हो रही थी कि मेरी बॉडी में बुलेट भी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अच्छा स्टेटमेंट। जी.
तो प्रॉब्ली चांस होता है कि उनका जो मतलब उनको तब एनर्जेटिक फील हो रहा था ज्यादा। एनर्जेटिक तो नहीं कह सकते, बट हाँ लाइक न्यूरल जो बेसिकली आपकी बॉडी जब होती है, मैं आपको बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बता देता हूँ। आपका पेन बॉडी नो जो इंटेंस पेन कह सकते हैं। नो इंटेंस पेन आपके बेसिकली न्यूरल कनेक्शन हटना, या फिर कुछ ऐसा कुछ होना जो हमारे नॉलेज में नहीं है अभी की टाइम, ठीक है, ठीक जिसकी है। वजह से हम अभी टेस्ट कर रहे हैं। अभी जो टेस्ट वगैरह होंगे वो कैसे कंडक्ट हो वो भी गाइड करूँगा। तो वो है, वो उनके साथ हुआ था। उसके बाद लाइक ही सर्वाइव फॉर सम टाइम। उसके बाद उन्होंने क्या, मुझे कोई पेन फील नहीं हुआ, बट ही गेट डिजी और उसके बाद गिर गया। प्रॉब्ली चांस होता है, क्योंकि अगर डिजी हो रहे हैं, दो तरीके से पॉसिबिलिटी है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कह सकते हैं कि चलो उसका क्या कहते हैं, इंजेक्शन का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, वो न्यूरल सिस्टम उस लाइक थोड़ी थोड़ी देर के लिए उनको मतलब जैसे एक एक मिनट में डिफरेंशिएट आ रहा था कि एकदम से ही वो चक्कर खा गए थे। वो कह रहे हैं कि टाइम पीरियड पर्टिकुलर टाइम तक, लाइक उनके हिसाब से 5 to 6 मिनट तक के बाद में वो बेहोश हो गए, दोबारा बेहोश हो गए, गिर गए। तो प्रॉब्ली अच्छा चांस दो ठीक है। चीज़ें हो सकती हैं, कोई एनी एनी तुम लोग इसके ऊपर क्या, तुम लोगों के दिमाग में क्या आता है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हेलो मिस्टर नारियल, हाउ यू Okay, डूइंग? there are two possibilities according to your description. हम्म। पहला कि जो आपका न्यूरो रिसेप्टर और आपके न्यूरल सेल्स होते हैं ना ब्रेन में, हम्म। उसके बीच, बिकॉज इट्स टेम्पररी राइट, इट्स नॉट यस। परमानेंट, हम्म। तो देयर कुड बी अ ब्लॉकेज, लाइक अ टेम्पररी ब्लॉकेज. बेदवर्ड किस चीज़ का ब्लॉकेज का, उसकी पॉइंट क्या होता है कि अब टेम्परी ब्लॉकेज होता है, Yep, जो that's what I can't understand. That's the जो मुझे thing. पॉइंट समझ अगर ब्लॉकेज होता है वो स्पेशली उसी आर्टरी पे इंजेक्ट किया जाता है, राइट? स्पेसिफिक आर्टरी पे Yep. इंजेक्ट शुड किया। आई एड वन पॉइंट कि वो कुछ टाइम इफेक्टिव रहता है और उसके बाद उसका जो सिम्टम्स है दिखाते हाँ हैं कि वही वो बोल रहा बेहोश हूँ, होता है। लाइक वो चीज़। या तो ब्लॉकेज डिसॉल्व हो यस। जाती है, समथिंग लाइक हाँ। दैट. एक मिनट, Z25 दिमोचरी हमारा ट्रैकर देख रहे हो, उसके रूफ टॉप पे आ जाओ, वहाँ पे दरवाजे पे अच्छा, आप देखोगे लोग रूफ टॉप क्लॉक्ड है। इन नहीं है क्या? मैं क्लॉक्ड इन हूँ, आई तुम डोंट थिंक मेरी। सो. अच्छा, उधर ईमेल पे नहीं हूँ मैं, क्यों मैं पता है मेल नहीं ईमेल हो पे रहा, नहीं। किसी का भी नहीं हो रहा। हो नए रहा है, हो वाले, रहा है. नए वाले पे हो रहा आई एम नॉट एबल टू। है नए वो। वाले पे, नए नए वाले वाले पे. पे छोटा लिखो, समझो, छोटा ई मैस लिखो, हो जाएगा। नया कहाँ है? वो जो उधर ही उसी में नया, वो पुराना, वो वो जो नया नया, ज्वाइन नहीं किया? नया नहीं किया, वो ज्वाइन, नया ज्वाइन करो ना, वो अभी हमारा हट गया, पूरा नया वाला आ गया। ईमेल पे या अनाउंसमेंट पे पढ़ के देख लो। अनाउंसमेंट सेक्शन चेक करो. ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताओ नारियल, व्हाट डू यू से अबाउट इट? नारियल। I'm getting a call, sorry. Okay. Can If you I can speak, excuse me? sure, sure, you can take your time. Naril, if you can speak a little louder, I cannot hear you from that particular area. नहीं है अनाउंसमेंट में भी। है अनाउंसमेंट में है, मैं तुम्हें भेज दूंगा, चलो। I cannot hear you, Naril. Your throat is not working actually. Couldn't hear you. Oh, sorry. Yeah, Okay, sorry, sorry. sorry. So you, Uh, मुझे suggest about it actually. the patient was not feeling any pain, na? That's Not feeling majorly. pain. He was shot down on his. I don't know. He didn't define the pain where he was shot, but yeah, he was not feeling pain after getting injected from that drug. Acha. And after he, अभी क्या, how is the situation अभी? Is he feeling better थोड़ा? He felt better. He was not feeling any kind of pain in his body. हाँ, now he has no pain ना, after Hmm. like feeling थोड़ा सा. Hmm. So he need to try to Sorry, like there was hammer an हमारा urgent call. पैर पे, you know, like to Hmm. test his nervous system or something. The thing is, no one is pretty much experienced about injecting the things into intravenous, else the pretty much doctors. I I don't. don't think we have any neurosurgeon or No, 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 neurospecialist, no, no? no, not neurosurgeon. अगर कल को मैं, for example, I'm gonna give example. If you are a doctor, you know where the body veins goes through, right? आपको पता है कि body के veins कहाँ पे है, क्या चीज़ है, वो चीज़ है, ठीक है? Yeah. That can be a possibility, right? पॉइंट कहने का मतलब Okay. यह है कि नो वन एल्स इज, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या उसको इंट्रावेनुलर इंजेक्ट की गई है, या फिर इंट्रामस्कुलर की गई है। इंट्रामस्कुलर की गई है तो कैसे उसको वेन न्यूरो सिस्टम के बॉडी के वेन्स पे अफेक्ट किए, ठीक है, Yeah, मस्कुलर, वो पता नहीं. ठीक है। अगर इंट्रावेनुलर किए तो फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट हमारे पास कौन है, हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल सिविल लाइफ में कोई, या फिर कोई स्पेसिफिक कोई है जो क्लिनिक वाला है, कोई बंदा है, कुछ ना कोई तो होगा एटलीस्ट, कि जो ऐसा कुछ कर रहा होगा, जो इसको पता होगा। दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी में आ जाती हैं। व्हाट यू गाइस से? If I may say, जी जी बोलो। there were doctors who left SMH, no? LSMG, sorry, not LSMG। SMH. हम्म। There was. Yeah, so they could be, no? It could be, but
but still just ring. I mean, I'm just pointing it out that they left LSMG and now they are Yeah, that can be a doing their own possible. Okay, stuff. that can be a possibility. We can conclude that part too. हम इस चीज़ में ऐड अप कर सकते हैं. We can put that thing कि भाई हाँ ये possible हो सकता है कि भाई हाँ कुछ ऐसा हो सके जो छोड़ के चले गए हैं डॉक्टर्स Because वो. in intravenous, you need to be very careful. Yep, definitely. Otherwise, there are chances people ओ can die. देयर कैन बी अनदर और एक और पॉसिबिलिटी यही है मस्कुलर अगर इंजेक्ट करते हो पेन किलर कुछ मसल्स में इंजेक्ट होती है राइट कुछ पेन किलर मसल्स में इंजेक्ट होती है वो क्या काम करती है स्किन को नम करती है बॉडी के मसल्स को नम Yep. करती है स्किन को नम करती है राइट पर्टिकुलर टाइम के लिए ठीक है और कल को फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं इतने लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मैं मस्कुलर इंजेक्ट कर देता हूँ वो न्यूरल सिस्टम पे कैसे फिट करती है दैट इज़ द क्वेश्चन किसी को आइडिया है जनरली मुझे बता सकते हैं सजेशंस कोई भी सजेशन है कैसा फिट करेगा न्यूरल सिस्टम पे मस्कुलर इंजेक्ट की गई कल को फॉर एग्जांपल मस्कुलर इंजेक्ट की गई है एक चीज मैं कहना चाहूंगा जैसे मस्कुलर हम्म, इंजेक्ट की गई है तो क्या उसके कुछ वाउंड्स के रैशेज या तो उसका कोई मार्क रहेगा वहां पे उस पार्ट पे क्योंकि इट्स अ पॉइंट ये अभी रिसर्च हैवी। करेंगे ये रिसर्च करेंगे इसी चीज़ पे तो रिसर्च कर रही है अभी थोड़ी सी अभी मैं आपको हाँ बताऊंगा जी। अभी रिसर्च के लिए बट मुझे जिस आइडियाज आप लोगों से चाहिए योर सजेशंस फॉर बिफोर गोइंग थ्रू द प्रोसेस कि अगर मैं कल को ओके इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट कर देता हूँ कल इसी चीज़ को ओके okay, how it gonna affect your neural system. I just need to see your knowledge and experiences और ये सारी चीज़ें experience इसको चेक करना है सर आगे. देखिए I got. जैसे आप कह रहे हैं Okay. कि हम्म जो आपने कहा कि वो जब हेनरी चार्ल्स ने लगा तो वो थोड़ा टाइम के लिए जैसे वो ठीक रहा दोबारा से मूवमेंट उनका रहा तो दैट कुड बी दी अदर वे जैसे हम आप कह रहे हैं कि हम इंजेक्ट करेंगे तो उसका न्यूरल सिस्टम में क्या पार्ट पड़ सकता है। एक तो उसका साइड इफेक्ट भी रहेगा जैसे तक मेरे को लगता है मैं इट आपको कुड वो बी एक्सप्लेन करता हूँ चांसेस मुझे टू नहीं गेट मुझे बैड। मुझे वो मैं साइड इफेक्ट्स पे बात आता हूँ मैं बात वो अभी बात करता हूँ अभी के लिए क्योंकि अगर वीडियो साइड हम्म। इफेक्ट्स हैं हुए हैं वो अभी बट मुझे जस्ट सी योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज आई जस्ट नीड टू नो हाउ दैट muscular thing can affect the neural system just need to know about that thing कल को मैं आपको इंट्रामस्कुलर लगाता हूँ हाँ लाइडोकेन विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ लोकल एनेस्थीसिया अगर आप इनको मसल्स में इंजेक्ट करते हो ठीक है लोकल एनेस्थीसिया मसल्स स्किन नम करने के लिए तो कल को आप यूज़ करते हो उसके लाइडोकेन तो आपकी स्किन नम हो जाती है ठीक है दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ थिंग बट स्पेसिफिकली कोई लोग हैं जो इंजेक्ट कर रहे हैं डेफिनेटली या कुछ ऐसा कुछ केस मुझे बता सकते पॉसिबल है आप लोगों के माइंड में आपकी नॉलेज में See, I have a theory. It's a हम्म theory, हम्म purely factual based. Okay. हम्म You said they call it juice, right? यस दे कॉल इट जूस And like, suppose if you drink too much alcohol, हम्म you won't feel the initial pain of anything. Like, it was used in, like, alcohol was used in medieval period to treat like highly painable wounds. No, हम्म people used to drink it. हम्म So maybe is they call it juice because they probably drink it no they and it don't goes they through the injected vein. it they injected actually that's the point Okay. In that's the the kind of like the syringe yes it kind of syringe yeah structure I think I do have some one of the samples of it but you because know that will be could come Nariel what you for say the about it inject. Nariel what you say about it Was there like possible chance of paralyzing the patient? what's sir can you repeat that Maybe it's possible they were trying to paralyze the patient, right? yeah paralysis can be a possibility but you know he's okay so there's okay this is a report about Henry Charles that he was okay let me complete the Henry Charles report he was he was injected that drug after some for some time period he was not feeling any kind of pain he was back on his feet but suddenly he fell again unconscious there might be a possibility that he bleed out he passed out because of the bleeding or there might be another possibility that the drug has stopped the bleeding process I mean the process of blocking the neural system disconnectivity of the neural system there can be two possibilities that would happen to Henry Charles and according to Saranjot's report uh, the patient, there was another victim. Okay, another. According to the Saranjo report, there have been seen a lot of people
been injecting some kind of drug to the people, and people are getting back on the feet on the scene. They are pretty much sure the suspect was shot down because they have been using the lethal arms on the officers. But after getting injected by that drug or any drug, we're not sure which drug was being injected to them, but there was a drug which has been lately injected to them, and which has showed the sign that they are getting back on the feet, right? For that So it's particular like a time. drug. Hmm. It's like something you're making a person into a superhuman or something. Uh, there might be possibility that it can be, or Could it can be. be possibility that they are disconnecting the partial, just disconnecting the neural system that indicates the pain in the body of the human being for a particular time period, and person will just wakes up and shoot the people. Yeah, they don't feel anything. They're just numb Yeah, they are totally. just just for example, I'm gonna explain to you. Have you heard about the terrorist groups? The terrorist group, how this suicide bomber works, how did it operate in the situation? Any ideas? Who? Suicide bombers, the Yeah. terrorists, right? So definitely, I Yeah. have heard about it. I heard the stories. I haven't known about it pretty much. They have been injected by some kind of drug, which for the moment they don't feel pain and they are willing to sacrifice themselves because they don't feel pain. They are not afraid for getting pain after getting blasted out. It's the stories, and this is pretty much my assumption, which is getting into me a point and linking me this story about the terrorist group and this drug which has been injected to the terrorist group before suicide bomb attacks or something like that, and and the case right now which is currently is going on the Los Santos. This is some kind of drug that is helping out to people out to disconnect the nervous system from the body and for some particular time period, not permanently. Because if you disconnect the neural system, this neural system from the body, it's gonna put you in a danger and makes you even can cause you to death because of it, if it's for a long time period. So there might be possibility that you could say, I mean, this could be a very dangerous drug that can harm your nervous system for a time being. That's what my assumption is. So I just need to know your theory. I have explained everything to you, what has been Yes, seen, yes. okay, which has been seen, or like you could say, what we do have as evidence, right? So, okay, so can you just give me your suggestion, what you see, what you say, like for example, what you say, what you think about, what your assumptions are, so I could see your knowledge, your ideas, your suggestion about the theory that we have come up to. Okay. Dr. Saif, I think that you are saying to it, this will react to your neural system. So after that, भाई इतने using एसन that, वेलकम we स्ट्रीम should एहसान also एहसान note सॉरी एहसान that वेलकम that स्ट्रीम क्या लगा कैसे वेलकम that स्ट्रीम could also इंडियन हो ना नहीं मैं affect थोड़ा to चौका गया the नहीं नहीं मैं इंडियन नहीं हूँ like other system of our body, like not एशियन नो reacting नॉट to the इंडियन other systems, like reacting to the legs they are working after them, they are getting injured or and all that work. The person after injecting that juice into his nerves, and they after some time period of like 2 to 3 minutes or 5 minutes, the it's a back to natural like working legs and having a good movement. And as I could see, that could be a bad impact on the other I symptoms know like that can be a bad impact. testing Okay. in your heart attack, like pulses Uh, can be slow ऐसे ही down. चल रहा था कोई Also, इशू the नहीं neuro will be वेलकम स्ट्रीम don't बैक react much after some time. It can be used for 2 to 3 times. I think. what do you think? You know, it could like affect the brain also. Not it will become kind of numb, or maybe Definitely, they couldn't I'm pretty think. much sure And Sure, about it. sure. So, so it's almost like they're becoming like zombies. You know, देखो क्या kind of. दिक्कत है They are यार almost रोज shot मिलेगा down. ये वाइट लिस्ट का बट They सर्वर get में this वाइट juice लिस्ट नहीं in, किया and पहले बताओ. they're You back have to on fill their the form. feet. मैंने They're आपको क्या idea. numb to the pain, So if you go to the public announcement, you and can see the form procedure के वो तो मैं this white could list be का really पढ़ना पड़ता है. dangerous. Right, there's a procedure for that. Yeah, definitely. That's why this whole research is purely based on actually this user.
what you think about Mr. Joe? So that okay, just let me complete it. I haven't completed the story yet. I forgot something. So after a a few days, Henry Charles was feeling weak. He was not, he dedicated to his duties because of the I don't know what's happened, how it affected the brain cells and everything. But yeah, he it didn't like pretty much you can say he was not dedicated to do his duties as he does normally. He was like feeling weak. He get exhausted every time when he comes on duty. He's afraid to run for a long time. He cannot run for a long time. So yeah, this is what just happened with the Mr. thing, right? Maybe we are focusing on the wrong thing. What you say? Like मैं एक बार maybe तुम्हारा जब it's बताऊँ not फॉर्म के the लिए क्या accepted मैं बताता way हूँ सब मैं देता of हूँ transmitting the pain. Maybe it's the hormone that is not getting released in the brain. and got to Like this टाइम for लगता है थोड़ा pain, मेरे you दोस्त को need मैं बताता हूँ endorphin ऐसे in the brain. वन ऑफ माय फ्रेंड डिड दिस थिंग उसको If मिल गई था endorphin get तुम released, you will उसमें feel फॉर्म में दोबारा pain. बता दो उसमें But अकाउंट if उसमें जाओ नो the इंडिया डॉट कुछ डॉट endorphin नेट पे gland is blocked, you will never feel pain. alright so yeah that's a good point again. Hmm. All right. So, yep. As we, this is the previous thing that we have done the microscopic analysis, which doesn't showed anything that only we came to know that there's some kind of different molecule structure and the different composition of the molecules which has been not discovered discovered yet or which has not been here in the laboratory before. Okay, so next thing, there was a one victim, Henry Charles, and the neurosurgeon effect. So now what we gonna do right now? So मैं तुम्हारा आंसर देता हूँ ऐसा मेरे सारे कंप्लीट करने दो आरपी. let, let me discuss what we're gonna do and what we have Okay. discussed with the state right now. So probably we're gonna do a research on these things, how this drug has been used before, and by analysis we're gonna do some couple of tests. We're gonna do a genetic analysis on a rabbit right now. We're gonna take two samples of rabbit. We have already discussed with Okay. the this rangers department. We're gonna test it out like if we're gonna use a rabbit which is completely fine. He's nothing. He's living life normally. We're gonna inject this drug on him. That how okay, we're gonna use intramuscular for the moment so we can inspect how it is gonna be used. Okay, we're gonna use some portion of it. Okay, next. Okay, what we're gonna do right now, once we inject the drug to the animal, we're gonna inspect the Okay. thing how what is the behavior of that animal, how it does how the animal behaves, right? So we and how Yes, his sir. genes works, we can so that we can confirm is there any effect that is there any kind of some kind of effect that is happening in the genes of the animal or not. Next thing we're gonna do the HPLC test, which is a high performance liquid chemotherapy, which can help us out to understand the molecular structure of the of this liquid. Then we have to use the mass spectrometry for the composition of the molecules and the infrared chemotherapy, which we have to use the X-rays which are going to pass through the molecules to Okay. see the amount of the drug which has been in the, I mean, amount of the molecules which has been in the this liquid, this drug. Once we do with it, once we go for okay, on the next day we're gonna do one thing. We're gonna start working with the another animal which is pretty much injured, is not able to walk properly. We're gonna do the same thing. We're gonna inject the same drug on him, and how it gonna react. So we're gonna compare the both things, both sample. We're gonna observe the things. We're gonna do genetic analysis of those both animals. I mean both, I mean cases, and find what is the cause of it. And we have already taken the blood sample of the Henry Charles and see the DNA structure of the Mr. Henry Charles and the animal. How is it? Is it pretty much similar? It's just it might be some have some because the bone have been injected. It might the DNA might have something like pretty much similar. I believe in so. If not, then we're gonna see it through.
There might be some kind of a similarity in there, that still the drug is still inside the veins, because it just doesn't remove from your skin, as it's still in the body. Unless you change the blood of the human being, it's not, it will be always in the body, right? It's not just get emitted like a poop, right? It's just like we eat something and we get poop out. It's not something like that. So we're gonna, there's a I mean, if there's the drug, the new molecular structure is still in their body, we're gonna do we're gonna do blood transfusion for all the victims. We do have it right now in the Los Santos, so that we can get the better safety of the people who has been victim of the juice and consider that drug as illegal, right? Any questions? No, sir. No, as per not. Mr. Nariswamy, any suggestion you can bring it up? Okay, I don't mind anything. You can say anything you want to. For now, I told you everything, for now, what I understood. Mm-hmm. Maybe if I get to know anything other than this, All right. maybe in due time, if I get to know, I'll let you know. Sure. So probably I believe so. Definitely. Yep. We're gonna do the same thing. We're gonna. Okay. So for the time being, I'm gonna do different two type of tests on the same animal. One will be injected intramuscular. One will be injected intravenous. First, we're gonna see through the intramuscular how it works. If we inject the intravenous, I don't want that animal to die, right? We're gonna directly inject to the animal into the veins, and it goes to the heart. We're not sure that you can say that drug can affect the heart. That if it is a really serious drug that also can affect the heart, it can stop the, I mean, circulation of the heart, and stop the heart for the moment, because it's a painkiller, right? It's kind of a little bit risky, or it's kind of a little bit risky to directly give him to the IV. We're gonna start this test with the intramuscular, so we can see the observation about the things. Okay. All right. Yes, sir. All right. And that's I mean, that's my beliefs, and that's my obsession. I mean, observation and assumptions are, and yeah, let's see how this thing is gonna work out, and how this research is gonna work out for some days. Okay. So yep, Sure. this is the process. I mean, we're gonna start up, and yep, I believe so. We're gonna start working on these animals. So yeah, you can come here. Let's start off with the briefing. Come on. Okay.